Assalamu alaikum, everyone. In this video, I'm going to quickly go over the list of concepts that you need to know about for your A-level maths paper 3. Now, I'm not going to explain these concepts in detail here. The purpose is to just provide you a checklist that can serve as a reminder for everything that you've covered until now. And also, it can be a check that you haven't missed anything important, okay? If you do want a brief explanation of some of these concepts that I'm showing you here, you can have a look at the description below. You'll find some quick revision videos on some of the major paper 3 topics and also topical past paper questions along with yearly past paper solutions as well. Okay, so you can find all of that in the description below. Now let's begin with this. So first of all, we've got this modulus function. Modulus function, what it does is whatever you input inside it, it makes it positive. Iske baare mein humko kya batana chahiye? You need to be able to solve equations and inequalities that involve the modulus function. There's one important point. You always need to verify your answers at the end whenever you're doing this. Equation कैसे solve करते हैं? You can use this plus minus method. Modulus हटा के plus minus लगा देते हैं. Equations बन जाती हैं. You solve them separately. Modulus inequalities कैसे solve करते हैं? This is one possible method that works for every kind of inequality. Those sides of modulus, so एक side of modulus, so it doesn't really matter. It works in every case, right? So you treat it as an equation. Then you can use this plus minus method to find the critical values. अब वो find कर लेते हो, आप number line use करते हो to figure out which of the 3 regions or sometimes 2 regions satisfy the inequality. उसके हिसाब से अपने answer लिख देते हो, ठीक है? So sometimes you get inequalities like this. यहाँ पे एक side of modulus होता है. You just use that method. You can see that here. Number line use करते हैं और आपके पास वो final result आ जाता है. Sometimes you have modulus in both sides और उसके साथ साथ कभी-कभी आपके पास इस तरह से letters भी आ जाते हैं. For example, A की terms में कुछ आ रहा है तो आपने बस उसी तरह से standard वही process follow करना है. बस number line पे जब आप values लिखेंगे, so just make sure that you are using values that are in terms of A as well, right? So you need to be able to solve inequalities like these. Then you need to be able to sketch graphs of modulus functions. उसमें आप क्या करना होता है? There are a couple of things that you need to know about. One is that there are 2 possible shapes, this V shape and inverted V shape. ये 2 possible shapes होती हैं. आप कैसे draw करते हो? आप vertex find कर लेते हो. ये जो corner है, corner find करने का तरीका क्या होता है? जो अंदर वाला part होता है, उसको 0 से जो modulus के अंदर वाला part होता है, उसको 0 से equate कर देते हैं. Find the x value, x coordinate of the vertex, and the number that's outside, that is going to be the y coordinate of the vertex. अक्सर वो कुछ भी नहीं होता बाहर, तो उसका मतलब होता है वो 0 है. Once you have the vertex, you just take 1 point to the left of the vertex, 1 point to the right of the vertex, and then you just join those points, you get your graph, right? So you can have a look at some of these examples here. This is how this process works. You have to graph draw करने आने चाहिए of the modulus function. Okay, so that's all about the modulus function. Then you have binomial expansion. Binomial expansion में you need to be able to use this formula. When does this formula work? Paper 3 में आपको ये formula use करना आएगा. It's normally used when the power is fraction or a negative integer. There are some conditions that you need to know about. The first number has to be 1, or second expression, जो second term आपकी होगी वहाँ पे जो भी आएगा उसको आप x की जगह पे आप यहाँ पे formula के अंदर वो लिख दिया करोगे, right? So this formula that you need to know about. Now it only works when this condition is valid. X की जगह पे जो भी आपके पास आ रहा है, that should be between -1 and 1. Okay, so you need to be able to expand expansions like this. X की जगह पे जो भी आ रहा होगा उसको आपने बस फॉर्मूला में x की जगह पे वो इनपुट कर देना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है. फैक्टोरियल का पता होना चाहिए. फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 3 factorial is 3 times 2 times 1, that's 6, and so on. Okay, sometimes you have this form जहाँ पे cube root आ गया है, fourth root आ गया, उसका पहले power form में convert कर देते हो, उसको 1/3 लिख दिया, उसके बाद आप वो formula apply कर देते हो. Sometimes they ask you for the set of values for which the expansion is valid. You've got this condition. X should be between -1 and 1. So x की जगह पे जो भी आ रहा होगा उसको आपने क्या कर देना, -1 और 1 के दरम्यान में लिख देना. यहाँ पे 3x आ रहा था, आपने कहना 3x should be between -1 and 1, and then x is between -1/3 and 1/3 from that. Okay, अच्छा. Then sometimes what happens is you get something other than 1 as the first term. अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाए वहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको कॉमन लेना पड़ता है भाई, और फिर आप जो बाकी रह जाते हैं अंदर उसकी expansion कर लेते हो. So whenever you take something common outside, you have to keep in mind
you will have the power on that number as well. If you take 2 common from this, -2 will be the power of 2 as well, and then you just expand whatever you are left with here, end पे जाके उसको 2 raised to power -2 से multiply कर देंगे, उसको simplify कर देंगे. Okay, so that's what you need to know about binomial expansion. Then you have partial fractions. Partial fractions, where the first thing you need to do is you need to figure out whether the fraction that you've got is a proper fraction or an improper fraction. Agar a proper fraction ho, uske लिए आपको से 3 possibilities होती हैं. You can have non-repeated linear factors हो और उसमें repetitions ना आ रही हो. You've got this form for that. अगर आपके पास repeated linear factor कोई आ जाए, for example यहाँ पे you've got 3x plus 2 whole square, that's a repeated factor. उसकी form के अंदर आप एक दफा 3x plus 2 वाली term रखते हो, denominator में एक दफा 3x plus 2 whole square वाली term रखते हो. Quadratic factor आ जाए तो आपके पास quadratic factor के ऊपर bx plus c linear expression आ जाती है, right? So these are 3 forms that you need to know about. Then you need to be able to find partial fractions. के 2 methods होते हैं. एक method ये होता है कि आप x की कोई specific values input कर देते हो. That's what I generally prefer in every single case. x की values input करते हैं, जो brackets को 0 करती जाती हैं, कोई values eliminate होती हैं, आप constants की values find कर लेते हैं. दूसरा method क्या है कि आप सब कुछ multiply कर लो right side पे भी और उसमें coefficients compare कर लो. That's also possible. You've got these 2 methods. You can use them. Then if you have improper fractions, what do you do in that case? If you have improper fractions, यानी कि यहाँ पे partial fraction में आपको कौन सा case आ रहा होगा? When the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator. Greater वाला case नहीं आता, आपके पास equal to वाला case होता है जब numerator और denominator की degrees equal हो जाती हैं. जब improper fraction इस तरह की आती है तो आप क्या करते हो? सिर्फ एक चीज करनी होती है, जो पहले वाली सारे फॉर्म्स थी they remain as they were, बस आप एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो एंड के ऊपर या स्टार्ट में कर दो. एक कांस्टेंट उस हर फॉर्म के अंदर ऐड हो जाता है. तीनों फॉर्म्स के अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं. अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल होता है. What you do is you look at the first coefficient of the numerator और denominator की भी. अगर आप simplified form देखो, 2x into x, that's going to be 2x square. Simplified form के अंदर आप क्या करते हो? इनके first terms को divide कर देते हो, first coefficients को divide कर देते हो और terms को divide कर देते हैं. For example, in this case, you just say 4x square over 2x square. That's going to give you the value of the constant. वो constant की value आ जाएगी. उसके बाद बाकी सब कुछ आपके पास उसी तरह से हो जाएगा. आप multiplication कर लोगे. Then you can use any of the 2 methods. You can either input some specific values of x, or you can use comparing the coefficients method. Okay, so both of them are going to work after that. Partial fractions के साथ अक्सर binomial का question combine आता है. Second part, partial fraction का first part में आ जाए. Second part, अगर हमने partial fraction find कर लिए हैं, उसके बाद आप उसकी expansion कर सकते हो. Expansion किस तरह से करोगे? जो आपके पास denominator में होगा, उस denominator को आप ऊपर ले आओगे numerator के अंदर. It becomes for example, if you got 2 minus x here, that can come to the numerator. It becomes 2 minus x whole raised to power -1, and then you expand that thing. Then you have to keep all of those rules that we did in binomial in mind. कि ये first term 1 होनी चाहिए, इसको पहले आप 2 को बाहर लेकर आओगे. 2 power -1 is going to come outside like this, and then you just expand everything and simplify everything. You can get that expansion. So that's what we need to know about here. And by partial fractions, binomial expansion. Next, we have polynomials. So in polynomials, you need to first know long division. Long division कैसे करते हैं, पूरा process सबका पता होना चाहिए. You need to know about this relationship, dividend, quotient, divisor, और remainder के दरमियान में जो relationship होता है. You have to know about this. Then you need to know about remainder theorem. Remainder theorem works when you have a linear divisor. किसी linear चीज का divide करते हैं, तब आप remainder theorem use कर सकते हैं to find the remainder. And related to that is the factor theorem as well. Factor theorem में आपका बस क्या होता है कि remainder आपका 0 आ जाता है इनके ऊपर. When something is the factor of another expression, the remainder at the end turns out to be 0. Okay, remainder find करने का वो तरीका होता है. Now, whenever the divisor is linear, that is when you can use the remainder theorem. Otherwise, आप remainder theorem नहीं use कर सकते. Otherwise, आपको long division use करनी पड़ती है. Long division का एक alternative होता है, that's called synthetic division, and that also only works when the divisor is linear.
you if you know about that, you can also use that, but that's optional. You don't have to know that necessarily. अगर आप long division आपको आती है, you can do everything using long division as well. Okay, अब इसमें क्या होता है, you need to use those things to do a number of different things. कभी-कभी आपको उसने बताया होता है कि one expression is a factor of another expression, तो आपको क्या करना होता है, किसी unknown की value find करनी होती है. If the factor is linear, you can use the remainder theorem. If the factor is not linear, you can use long division. एंड पे जो remainder आता है, बस आपने क्या करना है, remainder को 0 से equate कर देना. ठीक है, उसके बाद आप remainder की अगर multiple terms आ रही हैं, आपने हर term को 0 से equate कर देना. Okay, अच्छा. Now then they also ask you to find roots of equations which are higher powers than quadratic. All you have to do in that case is when you have the factorization, for example, this is x power 4 something, आपको factorization आ जाती है, तो factorization करने के बाद अब अलग-अलग दो factors बना लो, quadratic factors होंगे at max, वो उनको solve करना में आते हैं, उनको solve करके you can find the solutions. Okay, now sometimes you get questions like these जहाँ पे they say show that a function is never negative. How do you approach these questions? Never negative. इसमें उसने first part में आपसे factors निकलवा लिए, in fact उसने a की value निकलवा ली है, उसने आपको एक factor दिया हुआ है. So once you have the value of a and also one factor, you can find the other factor. The factors आपने दोनों find कर लिए. When you factorize that thing, you get something like this. आपके पास factors आ गए दोनों. Now, since you have to prove that this expression is never negative, you can just think about these two expressions individually. इनकी values find कर लें, इनको figure out कर लें. Can they be ever negative? इन दोनों को figure out कर लें. तो आप क्या कर सकते हैं? These are both quadratic functions. Quadratic functions इनमें turning point find कर लें, क्योंकि ये दोनों U-shaped होंगे. दोनों के minimum points जो हैं, या तो वो 0 आ रहे हैं. First का 0 है minimum point, दूसरे का positive minimum point है. Since both of these quadratic expressions are either 0 or positive, इसका मतलब इनका जो product होगा, that's also either 0 or positive. So that's why it can never be negative, right? So that's the reason that we can use here. Never negative इस तरह से कभी-कभी पूछते हैं, something is always positive, never positive, always negative, things like that. We use the same method for all of those things. Sometimes they ask you to solve some inequalities, जो ज़ाहिर quadratic inequalities हमें solve करनी आती है, but what do you do about cubic inequalities? So for example, in this case, you've got a cubic function, cubic expression, और उसने एक inequality solve करने के लिए कहा है p of x less than 0. How do you solve this inequality? ये आपको पता होना चाहिए. इसका process, there are two possibilities for this. या तो आप उसके अंदर factorize करके उसको break कर लो, और फिर आप उससे reasoning करो कि अच्छा एक factor अगर positive होगा, दूसरा क्या होना चाहिए. दूसरी possibility क्या है कि आप modulus function वाला method यहाँ पे use कर लो. You just treat this as an equation, find the critical points, और फिर number line पे check कर लो कौन सा reason satisfy करता है. बस यहाँ पे number line वाला process पूरा आपको show करना जरूरी होगा, because उसने कहा है justify your answer. So it's really important that you show all the working. Okay, so these are the two methods that you've got for this. Yeah, number line wala method use kar sakte. This is easier, although slightly more lengthier. Slightly more lengthy, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है, so that's how you solve cubic inequalities. Then sometimes they give you a factor like this. या फिर उसने cubic factor दिया हुआ है, और आपको cubic expression दी हुई है, और उसको factorize करना है कहते हैं. Right now, mostly, in fact, in almost all of the cases, they give you one factor and then they ask you to factorize. Sometimes they don't give you any factor. What do you do in that case? आपको एक factor guess करना पड़ता है. वो guess किस तरह से करते हैं? जो भी आपका constant होता है at the end, उसके factors आप check करते हो. उसके factors, for example, 2 के factors 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, plus minus दोनों. उन सारी values को check करते हैं. उसमें देखते हैं कि अच्छा कौन से value आपको कौन सी value of x expression को 0 कर देती है. That would be one factor. Once you've guessed one factor, you can figure out the other factors using division like before. भी आपको पता होना चाहिए. And in some of the recent papers, you'll see questions like these, जहाँ पे a और b के terms में इस तरह से कुछ आ रहे हैं, और जो उसने factor दिया हुआ है, that is quadratic. तो आप इसमें डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते. आपसे a और b की वैल्यूज पूछ रहे हैं, आप लॉन्ग डिवीजन करते हो. लॉन्ग डिवीजन करके इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट एट द एंड व्हेन यू गेट द रिमाइंडर, यू गेट टू टर्म्स. आप उन दोनों टर्म्स को
x के कोएफिशिएंट को अलग से, कांस्टेंट को अलग से, जितने भी आपके टर्म्स आ रही हैं उनको अलग-अलग जीरो से इक्वेट करते हैं because the remainder has to be zero, and then that helps you find the values of a and b. You need to know about that process. That's pretty much all that you need to know about polynomials. Next, we've got logs and linear law. You need to know about this conversion from one form to the other. Logs और indices form में किस तरह से convert किस तरह से कर सकते हैं ये पता होना चाहिए. ln is the most commonly used log that we have in our syllabus. इसकी base e होती है. ln1 is 0, ln e की value 1 होती है. Log of negative numbers is undefined. You need to know about that. Log के अंदर कभी negative number नहीं आ सकता. You need to know the laws of logarithms, multiplication law, division law, power law. ये पता होना चाहिए आपको. Indices rules पता होने चाहिए. You get to use them quite often as well. Then you need to be able to solve equations that involve indices or logarithms. उस तरह की equation solve करनी आनी चाहिए. अगर आपको index form में आ रहा है उसको log लगा के आप solve कर सकते हो. You sometimes get this case when you have log on one side, some number on the other side. इसमें आप e को दूसरी side पे जाके base बना देते हो, and then you solve it like this. Sometimes the base could be something other than e. ये भी कभी-कभी हो जाता है तो उसमें आप वही log form से index form में convert कर देते हो. Sometimes you get log on both sides. जब दोनों side पे single log आ जाए बस log को eliminate कर देते हैं, उसको solve इस तरह से कर लेते हैं. When you have one log on one side and multiple logs on the other side, you have to use multiplication law or the division law to convert those multiple logs to one log first. So जब दोनों sides पे एक single log आ जाते हैं उसको eliminate कर देते हैं, उसको आगे solve कर लेते हैं. Sometimes you get some log terms and some constant. तो आप log terms को एक side पे लेके जा सकते हो और फिर उस पे multiplication law या division law लगाते हो और फिर e जो है दूसरी side पे जाके दूसरे number की base बन जाते हैं. And then you solve it like that. That's one possibility. There's another way as well कि constant के साथ ln e लगा दो, हर चीज को log में convert कर दो, फिर log को eliminate कर दो. You can solve it like this. Sometimes you have index form like this. For example, 3 raised to power x यहाँ पर आ रहा है हमारे पास. यहाँ पे log is not going to help directly. अगर आप directly log apply कर देते हो, you'll have on the right side log of 2 plus 3 raised to power minus x. That's not going to be helpful. इसका आप कुछ नहीं कर सकते इसके आगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के केसेस के अंदर? You'll have to use a substitution. 3 raised to power x की जगह पे आप कुछ और substitute कर दो. And then once you're done solving that equation using the substitution, end पे जाके आप वो substitution वापस input करते हो और फिर आप log use करके x की values figure out कर लेते हो. Sometimes you have to break down the powers like this. 3 raised to power x plus 2 आ रहा है, उसका break down कर लेते हो दो parts के अंदर, 3 raised to power x into 3 raised to power 2, and then you can use substitution. That can also happen sometimes. But then you have cases where substitution is not going to be helpful, even though it looks like that. 5 raised to power something आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 3 raised to power x आ रहा है. You can't use two substitutions because that's not going to be helpful. बस दो unknowns आ जाएंगे, एक equation होगी, इसको solve नहीं कर सकोगे आप. इसमें substitution helpful नहीं होती. आप यहाँ पे क्या करोगे? दोनों sides पे log ले सकते हो. That's one possibility. क्योंकि दोनों sides पे एक ही term है. That's why this works here. Plus minus नहीं आ रहा, आप directly log लेके कर सकते हो. या फिर आप क्या करो? X वाली term सारी एक side पे ले जाओ और उसके बाद कुछ indices rules use करके end पे जाके log apply कर. That's another possibility. Then you sometimes may have to use logs in inequalities as well. Everything works the same way here as well. कोई खास फर्क नहीं है. The only thing is that you have to be careful when you take log of numbers which are less than 1, 0 or 1 के दरमियान numbers का कभी आप log लेते हो, उनकी value negative आती है. So you've got to be careful in those cases. जब उनको दूसरी साइड पे डिवाइड करते हो जाके आपका साइन इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. So that's something that you've got to be careful about. Then you have linear law, where you have equations that may look like this. जो असल में linear नहीं होती, कोई exponential form हो सकती है, उसको आप log लेके convert कर सकते हो linear form के अंदर. When you convert it to that form, lefts आपके पास ये y equals mx plus c form में आ जाती हैं. Then whatever you got in place of c, that is going to be the intercept on the vertical axis, and whatever number you've got with the x variable here, that is going to be the gradient of that line. उसको use करके फिर आप कुछ unknowns find कर सकते हो, जो भी उसने question के अंदर आपसे कहा हो. So that's what happens sometimes. Again, this is another example of linear law. You can have a look at this. And finally, you need to know about the graphs of log and exponential functions. In this topic, we आपके iteration के साथ test होते हैं.
log और iteration के graphs किस तरह से draw करते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? Okay. Next, we've got trigonometry. Trigonometry, first of all, we need to know about the reciprocal trig functions, cosecant, secant, chord. How are they defined? When you have equations that involve these reciprocal trig functions, you have to convert them to their base functions. Secant theta, अगर आपके पास आ गया, उसको आप cos में convert करते हो, and then you can solve the equation like you used to do in paper 1. There's no difference there. You need to know about all of these different identities. The formula में दी होती हैं, ये आपको use करनी आनी चाहिए. You've got some double angle identities, some compound angle identities. You've got to be careful about the plus and minus signs. जो left side पे plus है, right side पे जो left side पे ऊपर लिखा होगा sign, वो left right side पे ऊपर वाला sign को correspond कर रहा है, तो left side पे नीचे लिखा होगा, वो right side पे नीचे वाला sign को correspond कर रहा होता है. Okay. You have to know about all of these identities. Whenever you're solving any trigonometric equation, there are two things that you always need to do for that. One is that you need to convert it to only one single type of trigonometric function. Sin, cos, tan में से सिर्फ एक में convert करना पड़ेगा आपको, फिर आप उसको solve कर सकोगे. और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो angle है वो सिर्फ एक angle होना चाहिए, ठीक है? So जो भी आपका angle है, सारे angles same होने चाहिए. So if you have x, all of them should be x. If you've got 2x plus 30, all of them should be 2x plus 30, and then you can solve that equation. Otherwise you can't. अगर वो same नहीं है, हमको आपको same बनाना पड़ता है using those identities that we discussed above. अच्छा, then you have to prove different identities. ये कुछ common cases आपको पता होना चाहिए. Cos 4 theta अगर आपके पास आ जाए, how do you simplify that? You can use the double angle identity for cos for that. Cos 2a की जगह यहाँ पे cos 4 theta आ जाएगा. तो basically जो left side पे आपके पास जो भी लिखा होगा, right side पे जो angle होएगा उसका half हो जाएगा. So left side पे we've got 4 theta. On the right side, we're going to have 2 theta there. And then you can simplify that further. Cos 2 theta को आप दोबारा से identity लगा दोगे, and that's how it works. If you've got cos 3 theta or sin 3 theta or tan 3 theta, what you do in this case is you break it down into two parts and you make it a compound angle. 2 theta plus theta और फिर compound angle identity इसके ऊपर apply कर देते हैं, ठीक है? Okay, then you have this r cos theta plus alpha or sin theta plus minus alpha. This form, it will always be given which form you've got to convert to. ये form आपको हमेशा बताई होगी. All you have to do is you've got to use these formulas. All you've got to do is you've got to use this formulas. R equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a. And they're going to give you the values. Alpha और r की values मिल जाएंगी. You have to be careful about the accuracy. जो उसने कहा हो decimal places का या exact number का, आपको वही use करना है. And you also need to know about the graphs of these reciprocal functions. Cosecant का graph, secant का graph, cotangent का graph, ये सारे graphs आपको पता होने चाहिए because you also get tested on them. Again, that comes with iteration. Trigonometric identities prove करने के लिए you've got to keep some things in mind. आप ज़्यादा complex side होती है उससे start करते हो, then you prove that equal to the other side. Complexity किस तरह से आप decide करोगे? जहाँ पे compound angles आ रहे हैं, double angles आ रहे हैं, you say that's more complex. या जहाँ पे different types of trigonometric functions आ रहे हैं, एक side पे let's say sin, cos, tan तीनों आ रहे हैं, दूसरी side पे सिर्फ cos आ रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा types of functions आ रहे हैं, that's more complex. And similarly, you've got some other thumb rules. आप इनको देखते हो in this order basically. Then you've got some other tips here. We've discussed some of these already. There are multiple ways of proving identities. Left side को right hand side के equal proof कर सकते हो, right side को left hand side के equal proof कर सकते हो. Sometimes when both of those sides are relatively complex, what you can also do is you can simplify both sides and then you can meet somewhere in the middle. दोनों sides को simplify कर लें, दरम्यान में जाके वो कहीं एक दूसरे के equal हो जाएंगे, and that's going to be a valid proof as well. But you can't take terms from one side to the other when you're proving identities. आप ये नहीं कर सकते, एक साइड से किसी चीज को उठा के दूसरी साइड पे नहीं लेके जा सकते. Differentiation में you need to know some paper 1 concepts: power rule, equation of tangents and normals, increasing decreasing functions, stationary points and their natures, chain rule. ये सारी चीजें आपको paper 1 से पता होनी चाहिए. And then on top of that, you have some new things. You need to know about the derivatives of all of these different types of functions. ये formula sheet में इस तरह से दिए होते हैं. X की जगह पे कुछ और आ जाते हैं तो उसके derivatives आप multiply भी कर देते हो. Okay, so you need to know about these functions.
इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं. And then if you have something like this where you've got one function inside another function, you start with the outermost function. जो बाहर वाला function होता है उससे आप differentiate करना start करते हो और फिर उसके अंदर वाला function और फिर उसके अंदर वाला function. That's how you differentiate functions. Product rule, when you have two expressions being multiplied, इसमें आपको product rule apply करना पड़ता है. That's how you differentiate. This is how the product rule works. U into V का derivative is uv dash plus vu dash. ये आपको use करना आना चाहिए. We've got some examples for that here. Quotient rule, one term divided by another term. इसमें आप quotient rule use करते हो. Again, this is given in the formula sheet as well. ये आपको use करना आना चाहिए. vu dash minus uv dash divided by v square. Whenever you got a fraction, you use this quotient rule for that, for differentiating that. Parametric differentiation, when you've got two variables being defined in terms of a third variable, these are called parametric equations. इनको differentiate करने के लिए आप chain rule use करते हैं, दोनों को अलग अलग differentiate करते हैं, फिर chain rule use कर लेते हैं. ये process आपको पता होना चाहिए. You've got implicit differentiation when you don't have y as the subject. इसमें differentiate जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को with respect to x differentiate कर लेते हैं. The most important thing here is when you differentiate y with respect to x, what you get is dy over dx, right? और x को with respect to x differentiate करते हैं, उससे आपको 1 मिल जाता है. You use that process to differentiate functions. आप दोनों sides को with respect to x differentiate करते हो, and then you make dy over dx the subject, and that's your derivative. You've got some examples of that there. Whenever you're given that the tangent is parallel to x-axis or the tangent is horizontal, इसका मतलब होता है that the derivative is equal to 0. And similarly for stationary points as well, the derivative is equal to 0. But sometimes they say the tangent is parallel to y-axis, vertical tangent है, उसमें जो आपका derivative होता है उसके denominator को आप 0 से equate करते हो. ठीक है? You don't put dy over dx equal to 0. जो आपको fraction आएगी इस केस के अंदर dy over dx की उसका denominator आप 0 से equate कर दो. Then they ask you about maximum or minimum value of the gradient of a function. Again, you don't put dy over dx equal to 0 here. Gradient is the derivative. जो आपका derivative आता है उसको आप gradient कहोगे और फिर उस gradient का derivative find करके आप 0 से equate करोगे. उसने gradient का turning point पूछा है. जो gradient function है उसका derivative निकालेंगे और उसको 0 से equate करेंगे, and that's how you will figure that value out जो भी उसने पूछी होगी. And then they sometimes ask you about tangent at a point with some parameter. यानी उसने आपको specific value नहीं बताई होती, इसका मतलब सिर्फ ये होता है आपको बस उस variable के terms में आंसर दे देना t के terms में. तो आप derivative निकालोगे वो आपका m हो जाएगा. x और y की values की जगह आप simply यही points input कर देंगे अपनी equation of line के formula के अंदर. y minus y1 equals m into x minus x1. इसके अंदर आप directly बस ये values input कर देंगे, उसको simplify कर देंगे, and you'll try to convert it to a form that is required from that. Integration में again you need to know some things from your paper 1. Power rule आपको पता होना चाहिए paper 1 से. Area और volume के formulas both with x axis and y axis. Definite integrals evaluate करना वो पता होना चाहिए. Integration में you need to know about integrating exponential function e raised to power something, sine, cos, secant square, इनके integrals. Remember x की जगह यहाँ पे कोई linear term आ सकती है, सिर्फ linear expression आ सकती है, linear के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, right? It has to be linear. When you got something linear like this is how all these are integrated. वो function आपको पता है किसमें convert होता है और फिर आप सिर्फ क्या करते हो, जो वो linear expression होती है उसके derivative से आप divide भी कर देते हो. ठीक है? So that's how this integration works. अगर linear नहीं है, this rule is not going to apply. उसमें कुछ और करना पड़ेगा. अच्छा. Then you have tan inverse. Tan inverse की ये form होती है जो formula sheet में दी होती है. इसमें you have to keep in mind there can't be any coefficient of x square. x square का coefficient यहाँ पे 1 होना चाहिए. अगर 1 नहीं आपको बनाना पड़ेगा. There's another form that you can use, but you'll have to remember that. अगर आपके पास ये form आ रही है इस तरह की, basically a derivative जो differentiation वाला rule होता है उसी से आती है. अगर आपके पास ये form है, that can be converted to tan inverse of ax. ये दो आपके पास rules होते हैं. You need to know about these. दूसरा आपको याद करना पड़ेगा if you want to use that. Otherwise, this always works as well. अच्छा, when you have
the derivative of the denominator in the numerator, you can use the log form. ये आप कर सकते हैं. Sometimes you have to manipulate a few things here in the sense कि किसी constant से multiply divide करना पड़ता है, वो आपको आना चाहिए. This is the log form. That's what you need to know about. Tan भी इसी तरह से integrate होता है sin over cos use करके. Cot भी ऐसे integrate होता है cos over sin करके. वो आपको पता होना चाहिए. When both of those things do not work, tan inverse भी नहीं चलता, log भी नहीं लगा, तो आप partial fractions कर सकते हो. Sometimes partial fraction करने के बाद फिर आप log या tan inverse कर सकते हो. You've got these forms that have been added to the formula sheet recently. ये partial fractions असल में होते हैं, लेकिन अगर ये form आपके पास आ रही हो, आप इनके directly integral इस तरह से लिख सकते हो, in this form or in this form. ये भी आपको पता होना चाहिए. Because if they give you something like this, they will not give you a lot of marks for this. तो आपको ये quickly इसके through करना आना चाहिए. Achha, this is something that has recently come in some papers, in a couple of papers that I've seen. First part में दूसरा quotient और remainder find करना है. Second part में वो कहता है hence find the exact value of this thing. अब आपने basically integrate करना है इस function को. अब इस fraction में जो numerator है that has a higher degree than the degree of the denominator, so it's an improper fraction. आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? उसने first part में से quotient और remainder निकलवाए हैं. आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और इस आइडेंटिटी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स के अंदर. सो दिस इज एन आइडेंटिटी दैट यू डन इन पॉलिनोमियल्स. ये यूज करके आप उसको ब्रेक डाउन कर लोगे दो पार्ट्स के अंदर, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट दोस थिंग्स सेपरेटली. दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आफ्टर दैट वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन जो आपके पास रह गई है, और ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट. ओके, so that's about fractions. If you have a product, you've got only one option really, that's integration by parts. या तो उसने substitution दी होगी, अगर नहीं दी substitution तो आप integration by parts use करोगे. You've got to know कि कौन सा u लेना है, कौन सा dv over dx लेना है. उसके लिए आप isolate use कर सकते हो, and then you just apply this rule. कभी-कभी दो दफा भी apply करना पड़ता है, so you have to be aware of that. For example, in this case आपको दो दफा integration by parts use करना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है. ln x की जो integration होती है, that happens using integration by parts, because you can write it as ln x into 1 and then you integrate it, because the direct integration आपको नहीं पता. Similarly, tan inverse of x को भी आप integration by parts use करते हो by writing it as tan inverse of x multiplied by 1. Sometimes you get an integration like this which cannot be simplified using integration by parts. So you have e raised to power x into sin x, for instance. If you apply integration by parts here, simplify नहीं होता, but what happens is eventually कहीं ना कहीं पे आपके पास वही form दोबारा आ जाती है. So what you do is you use this trick here कि original integral को आप कोई letter assume कर लेते हो, और नीचे जाके उसको उसी letter से वहाँ पे replace कर दिया, and then that goes to the left side, और आप I की value figure out कर लो यहाँ पे, and that's going to give you the final integral, right? So this is another possibility that can happen in integration by parts. You've got integration by substitution then. Whenever you have to use this, it will always be given in the question. हमेशा बताएगा आपको क्या substitution use करनी है. You can use that. You always have to differentiate that substitution that's given, और उसको use करके आप dx को भी u में du में convert कर लोगे. You need to know about this process. इसमें आपको limits भी interchange करनी पड़ती हैं, और कभी-कभी आपको इस तरह की मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल u इक्वल्स 2x + 1 है, और आपके पास यहाँ पे 4x भी आ रहा है, लेट्स से, तो आप देखने का 4x को किस तरह से आप चेंज करोगे. 2x + 1 को तो आप रिप्लेस कर सकते हो. 4x को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आओगे कि आपके पास 4x की वैल्यू भी आ जाए, उसको भी आप u में कन्वर्ट कर सको. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू समटाइम्स. जब लिमिट्स चेंज करते हैं तो उसमें यू गॉट टू बी केयरफुल कि समटाइम्स आपकी लिमिट्स रिवर्स हो जाती हैं. जो छोटी लिमिट होती है वो बड़ी लिमिट बन जाती है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाती है. तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, you need to know about this rule here कि आप लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हो. अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस इस तरह से आ रहा है, नीचे आपके पास 5 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है, इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग, उसने कुछ प्रूव करने के लिए कहा है, तो उसको आप चेंज करके इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हो. That's minus f of x with limits 3 to 5.
लिमिट चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं और एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं. दैट कैन हैपन समटाइम्स एज वेल. Then you need to know how to integrate powers of sin and cos. अगर odd powers हो उसमें substitution use होती है उसको break down करके. But whenever you are asked about this, they will tell you what substitution to use. तो आपको वहाँ पे hint मिल जाएगी. Cos cube के लिए भी इसी तरह से आप break करते हैं दो parts के अंदर, then use substitution. अगर even powers हो तो उसमें आप trigonometry use करते हो. Normally cos 2x जो आपकी cos 2x वाली आइडेंटिटी होती है उसको यूज करके यू इंटीग्रेट even power. Sin square cos square तो सिंपल होते हैं, but then sin power 4 and cos power 4 you can also integrate them using this same identity. Normally एक पार्ट में वो आपसे कोई आइडेंटिटी प्रूव करा लेगा, इसमें सेकंड पार्ट में इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा. बट यू हैव टू नो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके होते हैं इस तरह के इंटीग्रल्स. How do you choose which method is right? अगर वो सिंपल फंक्शन है डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो. अगर प्रोडक्ट है उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन दी होगी, अगर नहीं दी तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स है. दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट you've got. If it's a fraction you can use again substitution. If it's given, if it's not a substitution, you can use the log rule if it applies, or the tan inverse rule. If both of them do not apply, you can use partial fractions. If that doesn't work either, आप कभी-कभी fraction को break कर सकते हो दो parts के अंदर like this. X plus 1 over 2x अगर रखा हुआ है उसको आप break कर लो दो parts में, x over 2x plus 1 over 2x, and then you can integrate them separately. And then you could have a form like this जहाँ पे improper fraction आ रही है, numerator की degree denominator से ज़्यादा है. You can break it down using this rule. Dividend over divisor can be written as this thing, and then you then you integrate each of those terms separately. And finally, if none of those things works, you basically convert it to a product. आप denominator को उठा के ऊपर ले जाते हो. Then you either use integration by parts या कभी-कभी वो simple integration में भी convert हो जाता है. So that's integration. Next we've got differential equation. Differential equations में आपको equation form करना आनी चाहिए. You've got direct proportionality हो तो y equals kx, ये इस तरह से कर सकते हैं. So let's say you've got two variables x and y. Directly proportional हो सकते हैं, inversely proportional हो सकते हैं. That's going to be y over k over x, for instance. If you've got something being poured into a container and if there's also an outflow, तो उसका rate of change आपका क्या होता है? It's going to be inflow minus outflow. That's what you have to know about. Form करने के लिए दूसरे आपको कभी-कभी chain rule use करना पड़ता है. You've got to be aware of that as well कि उसने information एक variable के दी हो और prove करने के लिए कुछ और कहा हो तो आपको वहाँ पे chain rule use करना पड़ता है. For instance, I've got this example. इसमें question के अंदर आपको volume का rate of change बताया हुआ है और आपने prove करने के लिए आपको क्या कह दिया है? dH over dt. So आप volume को use करके volume का rate of change use करके एक equation बनाओगे, but then you'll have to find dH over dt using the chain rule because you know the formula for you'll have the formula, or you can make the formula for volume in terms of h as well. In the right side बना लिया, and then you use chain rule to find dH over dt and prove that thing that is required. तो कभी-कभी आपको यहाँ पे chain rule use करना पड़ता है. कब use करते हैं? जो information उसने दी हो, that's different from what you are asked to prove. उसमें आपको chain rule use करना पड़ता है. How do you solve differential equations? Equation solve करने के लिए you always have to first separate the variables. Variable separate करने के बाद दोनों sides को अलग-अलग integrate कर लेते हैं. Variable separate किस तरह से करने हैं? dy जिस side पे numerator में है, उस side पे सारी y की terms होंगी. dx जिस side पे numerator में होगा, वहाँ पे सारी x वाली terms होगी. And then you integrate both sides. Left side with respect to y in this case, right side with respect to x. उसमें सारे इंटीग्रेशन रूल्स पहले वाले यूज होंगे, बट रिमेंबर यू हैव टू ऐड प्लस सी आपने हमेशा ऐड करना है. सी की वैल्यू कैसे फिगर आउट करेंगे? फिर उसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स दिए होंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू गिवन y equals 0 and x equals 1, उसको यूज करके आप सी की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो. अगर आप सी की वैल्यू नहीं फाइंड करते इस पॉइंट तक, इट्स कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन. समटाइम्स दे आस्क यू फॉर अ जनरल सॉल्यूशन विदाउट एक्चुअली गिविंग यू एनी पॉइंट्स. आप इस पॉइंट पे उसको छोड़ सकते हो, बट मोस्टली they ask you for a particular situation, which is कि आप values input करके C की value figure out करते हो और फिर आप उसको simplify करके अपना final answer देते हो. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. Then you have some extra parts in differential equations जो थोड़े complicated होते हैं. For example, they ask you what happens to the value of a variable when another variable becomes very large or very small. तो आपको देखना पड़ता है कि उस variable के ऊपर क्या effect आ रहा है. For example, it was something like this here.
If t becomes very large, तो क्या होगा? e raised to the minus 2t, it's going to become 0. वो 0 हो जाएगा, आपको tan inverse of 1/2 रह जाएगा सिर्फ. That's what is going to happen to x here. Similarly, sometimes they say explain why one variable increases as the other variable increases. Basically, आपने prove करना है कि why are both the variables increasing. इसका क्या मतलब है? x और t के दरमियान जो relationship है, that's increasing. Increasing मैंने दोनों increase कर एक time के ऊपर, that means it's an increasing function. Increasing function कौन से होते हैं? When the derivative is positive. Derivative यहाँ पे क्या है? dx over dt. Derivative आप prove कर देंगे वो positive है, and then that is going to prove this thing that x increases as t increases. So that's what happens in these parts. ये आपको यहाँ पे करना होता है. इसके last parts के अंदर हमें कभी-कभी अक्सर वो आपके पास log terms पे कुछ आ रहा होता है. You have to make sure that you give your final answer as a single log term. उसमें multiple log terms नहीं होने चाहिए. उसको single log term में convert करना होता है. उसका तरीका क्या होता है? आप सारे coefficients को power में ले जाते हो log के, और उसके बाद आप multiplication rule लगा देते हो या division rule लगा देते हो to convert that to one single log. Okay. Next, we have complex numbers. In complex numbers, you first need to know what iota is. So whenever you have square root of -1, we can write that as iota. Iota की powers का पता होना चाहिए. Iota square in particular is -1. That's a real number. Iota cube, iota raised to power 4, in powers का आपको पता होना चाहिए. ठीक है? अच्छा, complex numbers को लिखते कैसे हैं? This is one way of writing complex numbers. X plus y iota or a plus b iota. इसमें एक real part होता है, एक imaginary part होता है. You need to know about conjugate of complex numbers. अगर आप imaginary part का sign change कर दें, that's called the conjugate of a complex number. Addition कैसे करते हैं complex numbers की? Subtraction कैसे करते हैं? Just add and subtract like terms. Multiplication, it just works like normal multiplication. फिर iota की powers आप देख लेते हैं. Division of complex numbers, you just multiply and divide by the conjugate of the denominator. And then you simplify everything. That's how division of complex numbers works. For any polynomial that has real coefficients, if there are any complex roots, they always occur in conjugate pairs. अगर आपके complex roots होंगे तो हमेशा conjugate pairs में आएंगे if the coefficients of the polynomial are real. ठीक है? अगर आपको एक root पता हो, दूसरा root उसका conjugate होगा हमेशा. You need to know how to find how to solve equations like these. These are quadratic equations, इनके अंदर end पे जो roots हैं वो complex आते हैं. ये solve करनी आनी चाहिए using quadratic formulas. में आपको breaking सारी show करनी होती है. Sometimes they tell you, sometimes they give you one complex root जो आपको verify करना होता है. Verify कैसे करते हैं? आप सिर्फ input करते हैं equation के अंदर, then you simplify everything. वो satisfy कर जाना चाहिए, and that will prove that that number, that complex number, is the root of the equation. Then you can write the other complex root as well. That could just be a conjugate pair. कभी-कभी वो कहते हैं आपको वो complex root बता देते हैं, आपसे वो बाकी root find करने के लिए कहता है. For example, in this case, if you know that these are two roots, which are x equals 1 plus square root of 3 iota and x equals 1 minus square root of 3 iota, अगर आपको ये दो roots पता है, आप जो तीसरा रूट है जो रियल होगा वो फाइंड करें. कैसे फाइंड करेंगे? आप इन दोनों रूट्स को यूज करके इसके फैक्टर्स लिख लेंगे. हाउ डू यू फाइंड फैक्टर्स? If you got x equals 1 plus square root of 3 iota, take everything to one side, and it becomes x minus 1 minus square root of 3 iota. This is one factor, and this is the other factor. You multiply those two, इन दोनों को multiply कर देंगे. इन दोनों को multiply करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? You get this thing. You simplify everything, you get a quadratic factor from that. ठीक है? Which is going to have real coefficients. Iota cancel हो जाएंगे सारे. ये आपके पास quadratic factor आ गया. अब इस quadratic factor को use करके you can find the third factor by just dividing this polynomial by that quadratic factor. आपके पास वो real root आ जाएगा. वहां से जो आपका तीसरा factor है वो मिल जाएगा. उस पर आपको root find करना वो कर सकते हैं, factor लिखना वो कर सकते हैं. That's how you deal with this. Similarly, it's not always going to be a complex root that is given. You can have a real root given, और उसको use करके आप बाकी factors निकाल सकते हैं using polynomials. For example, in this case, you've got a real root given. So z minus 4 would be a factor. You can find the other factor and then find the other complex roots. वो किस तरह आएंगे? उस quadratic equation को आप solve कर लेंगे using quadratic formula. You get the complex root for that as well.
Sometimes you get equations like these, simultaneous equations, जो complex numbers जिसमें आ रहे होते हैं. Just solve them like normal equations. बस end पे क्या होगा, आपके पास roots जो होंगे complex आ जाएंगे. Now what can happen in this case is that you will get an equation that is quadratic. For example, that's what we're getting here. आपने जब substitution की, substitution के बाद आपके पास एक quadratic equation आ गई. अब quadratic equation को कैसे solve करेंगे, उसी तरह से quadratic formula, even though the coefficients here are not real, these are complex. आप इसमें भी क्या करोगे, since it's a quadratic equation, आप quadratic formula use कर लोगे और उससे आपके पास roots आ जाएंगे. The only difference is going to be the roots are not going to be conjugate pairs. वो conjugates नहीं होंगे, लेकिन आपका process सारा वही होगा. But then sometimes you get equations like these, जहाँ पे सिर्फ W या उसकी powers नहीं आ रही, you have W conjugate. Now you can't just solve it using a normal method here, because W and W conjugate, now these are two separate variables. एक equation से आप दो unknowns नहीं find कर सकते हो. जब भी आपको इस तरह कुछ आ जाए, आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है इसको. So W is x plus iota y. आप उसकी जगह x plus iota y लिख देते हो, W conjugate की जगह x minus iota y लिख देते हो. You simplify everything. After doing that, at the end, when you have an equation like this, what you do is you equate the real parts in both sides and you equate the imaginary parts in both sides. उससे आपके पास unknowns की value आ जाएंगी, यहाँ से x और y की values आ जाएंगी, आपको simultaneous equations बन गई. x और y की values find कर ले, and that's going to give you that complex number w. So that's what can happen sometimes as well. Next, you've got Argand diagrams. Argand diagrams कैसे draw करते हैं? You have to know that real part, imaginary part, ये आपने वहाँ पे show करना है. जब grid बनाएंगे इसमें, क्योंकि loci आ रहे होते हैं, आपने क्या करना है, दोनों साइड, दोनों एक्सिस के ऊपर सेम स्केल रखना है. ठीक है, डिफरेंट स्केल रखेंगे आपको सर्कल सही नहीं बनेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही नहीं बनेंगे. आपने सेम स्केल रखना है दोनों एक्सिस के ऊपर. ठीक है. अच्छा, हाउ डू यू फाइंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ डू यू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको पता होना चाहिए. आर्गुमेंट जनरली हम -π और π के दरम्यान में रखते हैं, तो वो आप देख लें. बेसिक एंगल तो आप निकाल सकते हैं यूजिंग tan alpha equals y over x. इसी तरह से जो आपका मॉडुलस है, दैट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये आपके पास आ जाएंगे दोनों. जब बेसिक एंगल आपके पास आ गया आर्गुमेंट का, फिर आप देख लोगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, उसके हिसाब से आप एंगल लिख दोगे. बट रिमेंबर, यू ऑलवेज हैव टू यूज द रेडियंस हियर एंड नॉट डिक्रीज. Modulus argument form, so you can write complex numbers in another form. It's also known as polar form. There are two possibilities. R into cos theta plus iota sin theta, ये form होती है. एक आपके पास ये दूसरी form होती है, r e raised to power iota theta. So basically r की जगह modulus लिख देना है, theta की जगह argument लिख देना है, and that's your modulus argument form. So you need to be able to convert from Cartesian form to modulus argument form and modulus argument form to Cartesian form. ये conversions आपको आनी चाहिए. ठीक है. Next, you have square roots of a complex number. So you can find square roots of a complex number using Cartesian form. उसका एक process होता है, पूरा एक standard method है, हर दफा आप apply कर सकते हो. That's something that you need to know about. And then remember, the square roots होते हैं आपके पास, वो एक दूसरे का negative होते हैं. If one is a plus b iota, the other is going to be negative of a plus b iota. अगर आप Argand diagram के ऊपर देखें, they're basically 180 degrees rotation of each other. अगर एक यहाँ पर आ रहा है, दूसरा बिल्कुल उसके opposite side पर होगा. They're 180 degrees rotation about the origin. आप polar form का use करके भी square roots निकाल सकते हैं. If you already have the polar form, it's simpler to just do it directly using the polar form. So that's another process that you also need to know about. कभी-कभी आपको use करना पड़ता है. When two complex numbers are multiplied, their moduli are also multiplied और उनके arguments जो है वो add हो जाते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. This is the rule that we have. And when two complex numbers are divided, उनके moduli divide हो जाते हैं और उनके arguments subtract हो जाते हैं. इनको use करके you sometimes have some questions that you can solve, especially when you get forms like this and this. ये आपको prove करने होते हैं. ये इस rule को या इस idea को use करके basically prove हो रहे होते हैं. ठीक है. So you can see these examples here. You can have a look at these. ये आपको पता होना चाहिए. Okay. Next we've got loci and Argand diagram. So basically Argand diagram को use करके आपको
कुछ loci draw करने हो सकते हैं. So there are three possibilities. You either have a circle, you have a perpendicular bisector, or sometimes you have a line at a particular angle. ये तीन आपके पास types of loci बनते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कौन सा केस कब आता है. सबसे पहले, whenever you've got a form like this, z minus something, and you've got a modulus outside that, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लिखना है. z minus something वाली फॉर्म में लिखना है. अगर प्लस आ रहा होगा, अपने माइनस कॉमन ले लेना है और इस तरह से लिख देना है. ठीक है. Now what does this mean? This means distance of z from this point that you've got here. ये आपका इसका मतलब इसकी वर्ड में डिस्क्रिप्शन ये. ठीक है. सिमिलरली जो आर्गुमेंट होगा उसमें भी आपको क्या करना है, आर्गुमेंट z माइनस दिस इस फॉर्म में लिख देना है. इसका मतलब क्या है, argument of z, the angle of z from the horizontal line drawn at z1. उस पॉइंट से आपका एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो आपका इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसको यूज करके there are three types of loci that you have. एक सर्कल बनता है जब distance from a point is constant. एक perpendicular bisector बनता है when the distance between two points is equal. And तीसरा आपको argument बनता है, कोई argument की values में दी होती है. इसमें inequalities आ जाती हैं आपके पास depending on which distance is smaller or bigger or which angle is smaller or bigger. तो वो आपको सारे पता होना चाहिए. So there are different examples that we've got here. Connected with that is are these calculations. जब वो कभी आपसे पूछता है least value of modulus, greatest value of modulus, or least or greatest value of the argument, तो आपको loci use करके और उसमें कुछ trigonometry साथ आपको use करनी पड़ती है to figure out those values. Now there's some key things that you need to know about to be able to figure out some such questions. Shortest distance between a point and a line, that's always perpendicular distance. ये आपको पता होना चाहिए. Shortest distance between a point and the circumference of a circle, वो कैसे आते हैं आपके पास, उस point को join कर देते हो center of the circle के साथ. तो जहां पे वो circumference को touch करता है पहली दफा, that is going to be the least distance. अगर आप दूसरी साइड पे जाके circumference को टच करते हो सेंटर के थ्रू पास करके, that is going to be the greatest distance. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए. इसी तरह से least to greatest arguments basically tangents बन रहे होते हैं. जो नीचे वाला tangent होगा वो आपको least argument होगा, जो ऊपर वाला tangent होगा वो greatest argument होगा. Of course depending on which side of the positive x-axis you are, तो उससे वो change हो सकता है. लेकिन basically tangents बन रहे होते हैं. We've got some examples here. You can have a look at these. आपको loci के साथ कुछ trigonometry use करनी पड़ेगी to be able to figure such questions out. कुछ circle theorems भी यहाँ पे use हो रहे होते हैं अक्सर, तो वो आपको देखना है. ठीक है. Now you've got to be careful here. If you sketch your diagrams slightly accurately, आपके ये वाले questions answer करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. Otherwise आपको समझ नहीं आती diagrams की क्या करना. अगर आप बहुत rough बनाएंगे तो try to use a compass if you have time. आप कंपास से कर लें, उसका फायदा ये होगा कि आपकी अगर ये वाला पार्ट है उसके बाद तो आसान हो जाए. ओके. नेक्स्ट वी गॉट वेक्टर्स. वेक्टर्स में द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इज यू नीड टू नो अबाउट बेसिक वेक्टर नोटेशन जो आपने ओ लेवल्स में की हुई है. फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर से क्या मतलब है, यू स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड यू आर एंडिंग एट द पॉइंट बी. इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज OB minus OA. So second point का position vector में सिर्फ minus कर देते हैं first point का position vector. ठीक है. So you need to know about this representation of any vector in its position vector form. ये बहुत ज़्यादा use होता है. In A levels we have 3D vectors only. तो उसमें आपका x, y, z तीनों components हुआ करेंगे. एक आपकी ये vector form होती है इस तरह से. You also have an IJK form. इन दोनों forms में लिख सकते हो. You have to know both of them because sometimes they ask you to give your answers in a particular form. Magnitude of a vector, how do you find that? That's the square root of x square plus y square plus z square. ये आपको पता होना चाहिए. Then you need to be able to find unit vector in a particular direction. किसी भी direction के अंदर आपने unit vector find करना है. उसका magnitude हमेशा 1 होता है. So you need to know how to figure that out. This is the formula that we've got for that. ये आपको पता होना चाहिए. Adding and subtracting vectors, scalar multiplication, किसी number से multiply करना है. That's something that you should know. Parallel vectors किस तरह prove करते हैं. If two vectors are parallel, they're going to be scalar multiples of each other. एक दूसरे का multiple होएगा. आप ये भी कह सकते हैं कि जो x, y, z components हैं उनके दरम्यान में same ratio होगी, equal ratio होगी. ठीक है. So you need to be able to prove two vectors are parallel, or if it's given that they're parallel, you can figure
any component out that is missing. Scalar product या dot product कैसे figure out करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. Angle between two lines के लिए we've got this formula a dot b equals modulus of a into modulus of b into cos theta. ये formula sheet में भी दिया होता है. This is the formula that we use very often in vectors. It's used to find angle between vectors most of the time. Okay, so ये आपको use करना आना चाहिए. When you अच्छा इसमें acute angle भी आ सकता है, obtuse भी आ सकता है. अगर आपको acute चाहिए और आपके पास obtuse आ रहा है 180 में से minus कर दोगे and vice versa. Then you sometimes have to find the angle at a particular point. For example, वो कहते हैं कि ये PAR मुझे angle चाहिए. इसके लिए you can't just use any vectors. आपको एक particular order में करने पड़ते हैं. या तो PA और RA vectors दोनों A की तरफ point कर रहे होंगे या फिर दोनों A से away point कर रहे होंगे. तो आप उसको formula में लिखोगे. Otherwise आप इस formula से जो values formula से जो angle आएगा वो सही angle नहीं होगा. तो या तो दोनों A की तरफ point कर रहे हो या दोनों A से away point कर रहे हो, and then you can use that formula that you have. अच्छा, this is another point, small point that you need to know about that sometimes comes in handy in some questions. Dot product अगर positive होता है तो आपका angle acute आता है. Dot product अगर negative होता है तो angle आपका obtuse आता है. Perpendicular vectors. If two vectors are perpendicular, their dot product is going to be equal to 0. Okay? अगर उसने बताया हुआ है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, आप इसको यूज कर सकते हो. अगर आपने प्रूव करना है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, आप क्या करते हो, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो, वो 0 आ जाना चाहिए. ओके, अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया. इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाउ डू यू फाइंड दैट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट वी गॉट फॉर दैट. R equals a plus lambda d. This is the standard form of the equation of a line in 3 dimensions. ठीक है, d represents the direction vector, a is any point on the line, position vector of any point that you have on the line. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. डायरेक्शन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए. एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन है, उनके दरमियान में आपको एंगल निकालना है. दैट्स जस्ट गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स. उनके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान में एंगल निकालना है. दैट्स गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस. उसके लिए आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, cos थीटा वाला. स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करें. दैट्स पॉसिबल इन 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशंस के अंदर आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं. पैरेलल हो सकती है लाइंस, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, स्क्यू हो सकती है. पैरेलल लाइंस को चेक करने का प्रोसेस हमने पहले देख लिया, ये आपको पता होना चाहिए. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है दो लाइंस के दरमियान में, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. दोनों को इक्वेट कर देते हैं, लैम्डा म्यू की वैल्यूज निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन में चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. आप उसको यूज करके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं उस पॉइंट का. अगर वो वेरीफाई नहीं करती है एंड पे थर्ड इक्वेशन को, तो वो स्क्यू लाइंस होती हैं. ये दोनों प्रोसेस आपको पता होने चाहिए. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो स्क्यू लाइंस कैसे प्रूव करना है. दिस इज something that you also need to know about. Then you have perpendicular distance between a point and a line. This also has a standard process, and it keeps coming again and again in every other paper. It's again a standard process that you need to know about. Perpendicular distance between a point and a line. ये process आपको ये पूरा पता होना चाहिए किस तरह से figure out करते हैं. इसी के साथ कभी कभी आपसे पूछते हैं foot of the perpendicular find करने का, वो इसी मेथड के अंदर आपके पास वो भी आ रहा होता है. You can find both the foot of the perpendicular and perpendicular distance between a line and a point using this method. So that's another thing to know about. इसके साथ, if you look at recent papers, a lot of the questions basically involve diagrams. कोई 2D figure आ सकती है, mostly वैसे 3D figures आती हैं. Yeah, in fact 3D figures ही आती हैं levels में. Figures में आपके points दिए होंगे, कोई vectors पूछ रहा होगा एक point से लेकर दूसरे point तक. The idea is exactly the same as what you had in O levels. एक point से दूसरे point पे पहुंचने आप क्या करते हो, उसके लिए अब figure के ऊपर कोई path figure out करते हो उस point से starting point से end point पे पहुंचने के लिए, जिसपे आपको vectors पता हो. ठीक है, so वो आपको सारा process जो O levels में आप करते थे वही process आपको वहां पे use करना होगा. So you should have enough practice for that as well. Let's move to the final topic now. That's iteration. Iteration, the first thing that you need to do is you need to be able to prove
that a root of an equation exists between 2 points, उसके लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले तो इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो इस फॉर्म के अंदर, f(x = 0) के अंदर, यानी कि एक साइड पे 0 होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी साइड के ऊपर. You just input those points a and b inside the equation, और एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, एक पॉजिटिव आ जाती है, फिर आप कहते हो क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, उस वजह से आपका रूट एग्जिस्ट करता है between those 2 points. You need to be able to use iterative formulas. Formulas आपके पास मोस्टली गिवन होते हैं. कैलकुलेटर्स में किस तरह से आप वो iterative formulas इनपुट करते हो और किस तरह से उनकी वैल्यूज निकालते हो, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. Sometimes those values give you a final result. In fact, mostly they do. Sometimes they don't give you a result. जब उसने 2 possible formulas दिए हैं, उसमें से कभी-कभी उसमें से क्या होगा, एक कन्वर्ज करेगा, एक दूसरा कन्वर्ज नहीं करेगा. तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से प्रूव करते हैं कि कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही होगी. एग्जाम्पल, इन दिस केस द फर्स्ट फॉर्मूला हियर इज नॉट कन्वर्जिंग, और दूसरा कन्वर्ज कर रहा है, उससे आपको एक वैल्यू मिल रही है. नाउ इन दिस केस यू ऑलवेज विल हैव some accuracy restrictions given, 2 different places, 4 different places. It's absolutely necessary to follow them. Otherwise, you will lose marks for that. Okay. अच्छा, उसके बाद you need to be able to derive iterative formulas. अगर आपके पास एक equation है, उससे आप किस तरह से derive कर सकते हो? Basically, what you do is you make x, one of the x's the subject. उसको आप एक साइड पे ले जाते हो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड के ऊपर. लेफ्ट साइड के ऊपर फिर आप क्या करते हो? जो x होता है उसमें उसके साथ n+1 लिख देते हो, और राइट साइड पे जो सारे x's हैं उनके साथ आप n लिख देते हो, and that's going to be your iterative formula. ठीक है? So sometimes they ask you to do this. Iterative formula आपने खुद से बनाना होता है. आप एक x को सब्जेक्ट बना देते हो, उसके साथ n+1 लगा देते हो, राइट साइड पे n लगा देते हो. Sometimes they give you the iterative formula and then they ask you कि अच्छा ये किस इक्वेशन से बना है. आपने सिंपली क्या करना है, n+1 को खत्म कर देना है, n को खत्म कर देना है, और आपने सिंपल इक्वेशन बना देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है. That's what will represent the equation for which that iterative formula is valid. Okay, for example, in this case, उसने कहा state an equation satisfied by alpha. Alpha is the root of alpha is what you're going to get from this iterative formula. आपने equation बतानी है जो इसको satisfy करती है. आपने simply क्या किया, n+1 और n को remove कर दिया, and that gives you an equation. ठीक है, फिर आपने एग्जैक्ट वैल्यू उसके निकालनी है, तो आप बेसिकली उसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लोगे, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी. Okay, then they also ask you to sketch graphs a lot of times. अब ये sketching में there are a number of different types of functions that you need to know the graphs for. So let me just list them down. Linear functions, quadratic functions, cubic functions, ln, that's the log function, exponential function, e power x, trigonometric functions, sine, cos, tan, reciprocal correct functions, cosecant, secant, cotangent. इन सब के ग्राफ्स आपको आने चाहिए. वो यहाँ पे अक्सर आइटरेशन के अंदर टेस्ट होते हैं. तो एक पार्ट में आपसे वो पूछेगा, ग्राफ ड्रॉ करने का कहेगा, और आपसे वो कहेगा प्रूव दैट a certain number of roots lies between two particular points. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे and then write down के, so for example in this case it says show that this equation has only one root. तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला ग्राफ क्या था, y = x, राइट साइड वाला था 2 + e⁻⁻x. आपने दोनों ग्राफ ड्रॉ किए, दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है. So you write, since there is only one point of intersection, that is why there is only one root. तो ये लिखना जरूरी होगा वहाँ. ठीक है, फिर वो कहते हैं verify by calculation that this root lies between 2 and 2.5. ये वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हमने कहा था जो भी इक्वेशन होगी आपके पास उसको कन्वर्ट कर लोगे पहले किस फॉर्म के अंदर, f(x = 0) फॉर्म के अंदर. 0 एक साइड पे, बाकी सब दूसरी साइड के ऊपर. पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, एंड देन यू इनपुट दोज वैल्यूज. एक दफा आपने 2 इनपुट कर दिया, एक दफा 2.5 इनपुट कर दिया, एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, दूसरी पॉजिटिव आ गई, एंड देन यू से a root lies between these two values. Why? Because the sign is changing. And then in the last part, for example, उसने कहा है use an iterative formula based on the equation in part 1. तो इसको यूज करके आपने एक iterative formula बनाया. तो किस तरह हमने क्या कहा था, किस तरह से बनाएंगे, x आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है ऑलरेडी, बाकी सब कुछ राइट साइड के ऊपर है. एक x लेफ्ट पे आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे n+1 लगा दोगे और राइट साइड पे आप n यहाँ पे लगा दोगे. That's your iterative formula. Then you can use this to find
the value of alpha, वो आपके पास जब आगे iterative process होता है using calculator, you'll just use that after this. All right, so that's finally it. I hope you found this helpful. If you like this video, make sure that you share with others who might find this helpful as well. All the best for your exam. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.